Assalamu alaikum dear student. Today the topic which we are going to study is about vascular system of the plant. We have previously studied about the transport system in the plant, and in the transport system we have studied that the substances move from one part of the plant to another part of the plant through a certain vessels or tubes or pipe-like structures. We name them vascular tissues. Okay, so what is vascular system of the plant? The vascular system of the plant is that system which helps in the transport of material, food and water from one part of the plant to another part of the plant. For the conduction of this process, for the better performance of this system, there are certain tissues in these systems, certain tissues in this system. That tissues are called vascular tissues. Okay, the tissues are called vascular tissue. What are vascular tissue? By definition, if we see what are vascular tissue, we can say that vascular tissues are the tissues which help in the transport of substances from one part of the plant to another part of the plant. Okay, through what? Through vessels or through a system of narrow tubes. Through what? Through vessels or through system of narrow tube. हमारे पास vascular tissues क्या होते हैं? Vascular tissues वो tissues होते हैं जो कि मदद करते हैं हमारे पास वाटर को, फूड को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में. कहाँ से? From one part of the plant to another part of the plant. By the help of what? By the help of narrow बारीक क्या? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की मदद से क्या करते हैं? उनके ट्रांसपोर्ट को यकीनी बनाते हैं. ठीक है. Okay, so a vascular system is what? Vascular system is a system in which comprises of vascular tissues, and vascular tissues help in the transport of substances from one part of the plant to another part of the plant through narrow tubes. It's called vascular tissues. Vascular tissues are of two types. Number one, xylem tissue. Number two, phloem tissue. What? Vascular tissues are of two types. Number one is xylem. Number two is phloem. Okay. What is xylem tissue? Xylem tissue is made up of tubes. What? It is a tube structure. It has a tube structure. What? Xylem is like a tube, like a pipe. Okay, it is made up of tubes. Okay. Beside this, okay, the length of a xylem in a tall tree may be about 30 meter long. What? 30 meter long. Has estimated it is an approximation estimation that in a tall tree the length of a xylem tissue is about what? 30 meter. How it function? What is the function of xylem tissue then? If we come towards the function, then the xylem tissue only transport water and mineral from roots to the leaf, stem and other aerial part of the plant. Okay, what is the function of the xylem? Xylem transport water, minerals from the soil, from the roots to the leaves and stem and other aerial part of the plant. Okay, so xylem का काम क्या था कि वो सिर्फ पानी और नमकियात को ज़मीन से रूट की मदद से जज़्ब करते हैं और इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं. कहाँ पे? लीव्स में और स्टेम में. ओके, इसके अलावा xylem हमारे पास क्या बनाता है? वुडी स्ट्रक्चर. क्या? हमारे पास हार्ड वुडी स्ट्रक्चर बनाता है. हमारे पास दरख्त का जो हार्ड स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देता क्या है? ये हार्ड है, लकड़ी का है. तो वो किसकी वजह से? वो xylem की वजह से. सेकेंडली, कम टुवर्ड्स द phloem. What is phloem? Xylem is made up of tube. Phloem is also made up of long cells. What? They are made up of long cells. ये लंबे सेल से बने हुए हैं और हर सेल के दरमियान सेल के वॉल में क्या होती है? सुराख मौजूद है. जैसे कि छलनी के हमारे पास चलनी के सुराख मौजूद है, इसी तरह इनके क्रॉस वॉल में भी क्या मौजूद है? पोर्स मौजूद है. क्या मौजूद है? पोर्स मौजूद है. किसमें? फ्लोएम सेल्स के क्रॉस वॉल्स में, उनकी दीवारों में क्या मौजूद है?
पोर्स मौजूद है। इसके इन पोर्स मौजूद है जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीफ कहते हैं, ठीक है, सीफ कहते हैं। और फ्लोएम हमारे पास, और फ्लोएम ट्यूब्स आर कॉल्ड, और जो ट्यूब उस सेल से बनते हैं, किस सेल से, लॉन्ग सेल से, फ्लोएम के लॉन्ग सेल से जो ट्यूब बनता है, जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर बनती है, उसे क्या कहते हैं, सीफ ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, सीफ ट्यूब कहते हैं। What is the function of then what is the function of the phloem? Phloem helps to transport food from leaves to the storage point like root, stem and other part of the plant. Okay, so phloem का क्या काम था कि ये खाना जो कि फोटोसिंथेसिस की मदद से बनता है उससे लीफ से ट्रांसपोर्ट करता है स्टोरेज पॉइंट में। स्टोरेज पॉइंट हमारे पास क्या हो सकती है, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, स्टेम भी हो सकता है और रूट्स भी होता है। ओके, दिस इज द today's topic and it is about vascular tissue, and vascular tissues are of two types, phloem and xylem, and we have studied it in detail. Okay, thank you.